Assalamu alaikum, dear friends. Uh, I'm sorry that we have delayed the class 3 lectures. In fact, there was a pressure from class 4 and 5 and 2 and 1 since they were lagging behind. So now, inshallah, we will do, today we will do uh, 2 3 chapters of 2 3 units of this chapter 3, right? So just be with me. I'll give you, if you will be with me, then I'll be able to do it better way, right? आप लोगों ने मेरा साथ देना है. हमने कोशिश करनी है कि जी हम इसको ज़रा पढ़ें इस चैप्टर को. चैप्टर 3 जो है द डेजर्ट डेजर्ट किसको बोलते हैं? सहरा को, जहाँ रेत ही रेत होती है. ठीक है. तो सबसे पहले तो यह लिसन पार्ट. चूज़ अ क्वेश्चन, लिसन फॉर द आंसर, शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर क्लास. What is the weather like in a desert? What is the weather like in a desert? डेजर्ट में कैसा मौसम होता है भाई? डेजर्ट्स जो होते हैं ना, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बट देर आर फ्यू डेजर्ट्स के जो थोड़े से ठंडे भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर वेरी हॉट, राइट? वट इज़ द लैंड लाइक अ डेजर्ट? ज़मीन कैसी होती है अभी डेजर्ट की? डेजर्ट्स, they don't have any land like here we in the normal places. उधर सिर्फ रेत ही रेत होती है. ओनली सैंड देयर इन डेजर्ट्स. वट इज़ अ कैक्टस? कैक्टस क्या होता है? कैक्टस एक पौधा होता है जिसपे कांटे ही कांटे लगे होते हैं. दिस इज़ अ कैक्टस, राइट? दिस इज़ अ कैक्टस. What do the animals do when it is hot? Oh, yes. Now we learn that what do the animals do? बेचारे उनके पास तो कोई दरख्त भी बहुत कम होते हैं सहरा में, तो वो क्या करते हैं? What can you see in the desert? What animals live there? Right? These are the animals that live in the desert. हम चलें आगे, अब तफसील से पढ़ते हैं. Let's find out. This map shows the deserts of the world. What continent do you live in? Is there a desert on that continent? Find these deserts. Which continents are they in? Atacama Desert, Atacama Desert, Sahara Desert, Sonoran Desert, Sonoran Desert, and Gobi Desert. Right? The first Atacama Desert is in South America. Second Sahara Desert is in Africa. The Sonoran Desert is in North America. Sonoran Desert is in North America, and the Gobi Desert is in Asia, right? These are the 4 deserts we were talking about. और आपने देख लिया है इसमें कि कहाँ कहाँ पर हैं. डेजर्ट्स जो है येलो से शो किए जाते हैं. ये अभी आपने देखा. नंबर 1 एटकामा डेजर्ट, नंबर 2 अफ्रीका में जो है सहारा डेजर्ट, नंबर 3 जो है Sonoran Desert, which is in North America, and then the Gobi Desert, which is in Asia. Listen, which desert is the largest desert? Number 2, which desert has the tallest cactus? Which desert is wetter, the Atacama Desert or the Sonoran Desert? Which desert is colder in winter, the Gobi Desert or the Sahara Desert? Right? And first let's read and then we'll find out all these things. Use of English. Find the correct ending of each sentences. All deserts are called cold deserts, dry deserts, hot during the day but cold at night. All deserts are dry, right? Many deserts are hot during the day but cold at night. A few deserts are called cold deserts. ठीक है जी. यहाँ पर आपने बहुत आपको जो है ना मज़ा आएगा ये करते हुए. ऑल डेजर्ट्स आर ड्राई. इन तमाम डेजर्ट्स होते तो ड्राई हैं. एक्सक्यूज मी. Many deserts are hot during the day but cold at night.
एंड अ फ्यू डेजर्ट्स आर कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट्स। ठीक है जी, ये आपने आपको नोट करना हो तो नोट कर लेंगे। ऑल डेजर्ट्स आर ड्राई, मैनी डेजर्ट्स आर hot during the day but cold at night, and a few deserts are called cold deserts. Word study. Here you see a thermometer. This measures the temperature. We measure temperature in degrees. We measure the temperature in what? In degrees. 30 degrees is equal to, if you write this 30 and a small 0 on the top of it, it is equal to 30 degree. Minus 5 and this, it will tell us minus 5 degrees. Listen and write the temperatures you hear. Are they hot, warm, cool or cold? ठीक है, हम अभी पहले एक दफ़ा कोशिश करते हैं कि इसको पहले सारा पढ़ लें, फिर उसके बाद आपको सारे जवाब भी मिलते जाएंगे। ठीक है। डेजर्ट एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल्स, to talk about it, what do you know about camels? What parts of camel's body can you name? Language tip is, camel is it. A camel can run fast. It can run as fast as a horse. More than one, they. Camels live in the deserts. They don't need much water, right? These are the language tips. Okay, whenever once we are talking about camel, we will say talking about a camel, we will say it, and when again we are referring about it, then we can say okay, a camel can run fast, and instead of repeating the words camel, we can just say it can run fast as a horse. Camel live in the desert. And in the next sentence, if we want to again refer to the camel, हमने लफ्ज़ दोबारा camel की जगह हम लिख सकते हैं कि they don't need much water. So अभी ये इसमें आप सीखने वाली बात ये है कि कैमल है ना, इसी को अगर हम रिप्लेस कर दें इट से, तो हमें यही पता चलता है कि कैमल के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है। कैमल्स live in the deserts of Africa, Asia and Australia. They, अब देखें ये हमने पहले कैमल्स कहा था, अब हम कह रहे हैं they carry people and things across the desert. Before traveling across the desert, a camel eats a lot of food and drinks a lot of water. The food is stored as fat in the hump of the camel's back. हम्प क्या होता है? हम्प जो है कैमल के ऊपर ये जो होती है जगह, इसको बोलते हैं हम्प ऑफ द कैमल, राइट? कैमल्स बैक पे हम्प होता है, दिस इज हम्प, राइट? As the camels crosses the desert, it uses the fat in its hump as food and water. A camel can live for a week or more without drinking water. Wow! A camel can live for a week or more without drinking water. ठीक है? At the beginning of the trip, the camel's hump is big and fat, but at the end of the trip, its hump is much smaller. ठीक है? हमने पढ़ लिया कि कैमल्स जो है वो डेजर्ट्स में रहते हैं। कहाँ कहाँ? अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में रहते हैं। दे कैरी पीपल एंड थिंग्स अक्रॉस द डेजर्ट। वो डेजर्ट्स में लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिफोर ट्रैवलिंग अक्रॉस द डेजर्ट, ए कैमल ईट्स ए लॉट ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स ए लॉट ऑफ वाटर। यानी जब वो कैमल ने कहीं जाना होता है ना कैमल को, तो कैमल को ऐसी ट्रेनिंग की होती है कि वो पहले उसको एक दफ़ा बहुत सारा खिला लेते हैं और पानी बहुत सारा पी लेते हैं। ये फूड जो उसका स्टोर हो जाता है उसकी कैमल की हम्प में, राइट? इस हम्प में। एंड जब कैमल जो है ना डेजर्ट क्रॉस करता है तो उसको दरमियान उसको खाना नहीं मिलता, तो क्या करता है कि जो फैट उसने बनाया हुआ होता है अपने फूड से, उसको यूज़ करता रहता है, राइट? ए कैमल कैन लिव फॉर अ वीक और मोर विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। यानी कैमल जो होता है ये एक हफ्ते तक भी पानी ना पिए तो ये ज़िंदा रह सकता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रिप द कैमल्स हम्प इज़ बिग एंड फैट। जब सफ़र पे जाने से पहले उसका जो हम्प होता है वो काफ़ी बिग होता है और फैट होता है, बट एट द एंड ऑफ द ट्रिप इट्स हम्प इज़ मच स्मॉलर।
क्यों हो जाता है स्मॉलर? बिकॉज वो फैट जो है यूज कर लेता है दरमियान में, ठीक है। अब लेट्स टॉक। ए कैमल्स बॉडी इज बिल्ट फॉर लिविंग ऑन द ड्राई हॉट विंडी डेजर्ट। Look at the picture. Ask question. Why does a camel have a hump? Why does a camel have lips with lips with thick skin? Or you can ask that, why does a camel have long eyelashes? Then again you can ask, why does a camel have a long neck? Why does a camel have long legs? And why does a camel have wide round feet? अच्छा, अब इनके आंसर्स जो है आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इट हेल्प्स द कैमल रीच लीव्स ऑन tall trees. यानी why it has long neck? Because it helps the camel reach the leaves on tall trees. यानी ऊंचे ऊंचे दरख्तों तक वो जो पत्तों तक वो पहुंच सकता है वो, ठीक है। They help a camel walk on the top of a sand. यानी why does camel have wide round feet? उनके जो बहुत चौड़े चौड़े से और गोल पैर होते हैं, इसकी क्या वजह होती है कि they help a camel walk on top of the sand. ये उसको सैंड में चलने में मदद देते हैं, और उसके पाँव जो है ना, क्योंकि काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं तो इसलिए वो धंसते नहीं हैं पाँव में, राइट। They keep sand out of the camel's eyes. Why does camel have long eyelashes? उनकी पलकें बहुत लंबी लंबी होती हैं, क्यों होती हैं? Because they keep sand out of the camel's eyes. It stores fat for when there is no food or water. ये है ना कि why does a camel have a hump? तो we can say it stores food for when there is no food or water. फिर उसके बाद दे कीप द कैमल्स बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड. वाई डज द कैमल हैव लॉन्ग लेग्स? बिकॉज दे कीप द कैमल्स बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड. दे हेल्प द कैमल ईट spiny desert plants. Why the lips? Why does a camel have lips with thick skin? इसका जवाब यह है कि दे हेल्प द कैमल ईट स्पाइनी डेजर्ट प्लांट. स्पाइनी यानी जो है ना कांटों वाली चीज़ें जो होती हैं ना, कांटों को आप कभी कैमल को देखें गौर से, वो कांटे भी बड़े आराम से, उसके होंठ ऐसे इतने अच्छे ज़बरदस्त होते हैं, इतने सख्त होते हैं, उनको चुभते ही नहीं उसमें, वो खा जाता है, राइट. Now we go on to the reading part. Read about two other desert animals, the jerboa and fennec fox. The jerboa and fennec fox. How are they alike? How are they different? Make a chart with your class. Jerboa, phoenix fox, and both. Jerboa, Sahara and Gobi deserts, Africa and Asia. These जो है ना जरबोआ जो है ना, ये दिस इज जरबोआ और ये दिस इज फोनेक. They are found in Gobi Desert, Africa and Asia. Sahara Desert, Africa. So they are found in Gobi Desert and in Sahara Desert. और ये this is only found in Sahara Desert, but ठीक है जी. Sleep underground during day, closes tunnel with mud to keep out hot air, right. ये क्या है? स्लीप्स अंडरग्राउंड ड्यूरिंग डे, ये दोनों का कॉमन हो गई चीज़, ठीक है जी. ईट्स लीव्स रूट्स एंड इंसेक्ट्स एट नाइट. इट ईट्स जर्बोआज, लिजर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एट नाइट. Large ears help it to hear and catch the animal. The difference is that this jerboa, it eats leaves, roots, and insects at night, while this fennec fox, it eats the jerboas, right? Jerboas, lizards, and insects at night.
Large ears help it hear and catch the animals. Doesn't drink water, gets enough moisture from its food. ये पानी नहीं पीता बिकॉज इसने जो सारी चीज़ें खाता है जो उसके बीच में पानी काफ़ी सारा होता है। द वे ग्रीन चीज़ें खाते हैं ना, ठीक है, ये लीव्स रूट्स वगैरह खाते हैं तो उनके बीच में ऑलरेडी जूस या पानी बहुत सारा होता है, ठीक है। It also the phonic fox, it also doesn't drink water, gets enough moisture from its food. ये भी इसके भी फूड जो है ना ये होते हैं तो इसमें से मॉइस्चर मिल जाता है इसको, ठीक है जी। हैज़ लॉन्ग लेग्स टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड, इसकी भी देखें टांगें लंबी हैं। एंड लार्ज लार्ज ईयर्स हेल्प इट स्टे कूल, इसकी जो है ना बड़े बड़े कान जो है इसको ठंडा रखते हैं इसकी स्किन को। Hops like a kangaroo or its long back legs. Look at this and look at this. Its thick fur under feet helps it walk on the sand, hot sand. ठीक है जी. But look at this. Look at the size of this and look at the size of this. It's about nearly 35 and it is about 10, right? Choose the jerboa or the fennec fox. Answer these questions in sentences. Where does it live? Where does it sleep? How does it get enough water? How does it keep cool in the hot desert? And how big is it? When does it sleep? When does it eat? And how does it move in the desert? ये हम एक दफ़ा पूरा चैप्टर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इन सब चीज़ों के आपको जवाब भी हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी आपकी हेल्प कर सकें जवाब लिखने में भी, ठीक है। ओके, नाउ वी गो ओवर टू द यूनिट नंबर 3, that is desert plants. First of all, we'll read, have you ever seen a cactus? Have you ever seen a cactus? Where? Read and listen to find the answer to these questions. Why is it difficult for plants to grow in the desert? Because there is very less water and there is so much of heat. Why does a cactus need a very little water? Because now we'll read and understand this. The cactus. All living things need water. It is difficult for plants to grow in the desert because the desert is very dry. But some plants do grow there. One special desert plant is a cactus. Cactus plants have thick, waxy skin and sharp spines. You see, the skin is very thick and these spines, ये कांटे जो हैं इसके, they are very very sharp. Cactus plants can live with very little water. When rain falls, the roots of the cactus plant drink up the water very quickly. The water is stored inside the cactus under the thick, waxy skin. The cactus uses the water in the dry days ahead. The thick, waxy skin keeps the cactus from losing the water inside. अच्छा जी, अभी हम कैक्टस के बारे में पढ़ रहे हैं। कैक्टस एक ऐसा प्लांट होता है कि जो कि सहराओं में उगता है, मगर हम जानते हैं कि सहरा में तो बहुत कम बारिश होती है, बहुत ड्राई होता है। तो कैक्टस क्या करते हैं कि जब भी बारिश होती है तो इसकी जो रूट्स होती हैं ना बाकी प्लांट्स की निस्बत बहुत तेज़ी से पानी पी लेती हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। इनके ऊपर जो इनकी स्किन होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, उससे वो एकदम तेज़ी से पानी उड़ नहीं सकता, तो बहुत अरसे तक ये फिर कैक्टस जिंदा रह सकते हैं। अब द लैंग्वेज टिप इज द saguaro cactus is the tallest cactus in the desert. I think the fennec fox is the most beautiful animal in the desert.
When we compare one thing with a lot of other things, we use the dash, जो भी उसकी क्वालिटी हो, EST लगाते हैं. For longer words we use the most फलाना, द मोस्ट ब्यूटीफुल. यहाँ पर ये दी, टॉल से टॉलर और टॉलेस्ट, जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है वो टॉलेस्ट होती है. सबसे पहले चीज़ होगी टॉल, उससे बड़ी लंबी होगी टॉलर, और सबसे लंबी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टॉलेस्ट. हम इधर इसीलिए कह रहे हैं वी यूज़ दी, जो भी लफ्ज़ है उसके बाद EST, टॉलेस्ट कर देते हैं. ठीक है, थर्ड फॉर्म हो जाती है वो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म. फॉर लॉन्गर वर्ड्स वी यूज़ द मोस्ट. जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कहते हम कहते हैं मोर ब्यूटीफुल और द मोस्ट ब्यूटीफुल. राइट, ओके. ये ग्रामर की टिप थी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि छोटे लफ्ज़ों के साथ तो हम EST लगा देते हैं, मगर लंबे लफ्ज़ों के साथ द मोर और फिर मोस्ट लगा देते हैं. जो सबसे ज़्यादा हो उसके साथ मोस्ट, जो उससे ज़्यादा यानी पहले एक चीज़, फिर उसके बाद सेकंड डिग्री, फिर उसके बाद थर्ड डिग्री. थर्ड डिग्री जो है मोस्ट हो जाती है या EST लगा देने से बनती है. सो वी नाउ गो ओवर टू द यूज़ ऑफ इंग्लिश. We complete the question with the correct form of the word. We'll complete the words. We complete the questions with the correct form of the word. Then try to answer the questions. Which is dash continent in the world? Which is biggest continent in the world, right? And which is the driest desert in the world? Who is the tallest child in the, say, who now I'll show you how it is written, right? Which is the, for dry we'll say driest desert in the world. For tall we'll write tallest child in the class. Who is the dash person you know? Who is the funniest person you know? What is the, for interesting is a larger word. So as we have discussed on the previous page, that for the long words we don't say EST, but rather we use more or most. So if we want to say the most interesting, then we'll say what is the most interesting fact about desert, right? By the way, which is the biggest continent in the world? Asia is the biggest continent, right? Which is the driest desert in the world? It is Sahara. Okay, and rest of the questions you can answer yourselves. Now we go to the read and talk part. Read and talk part. Read and listen to the poem about the desert. Desert. Shh. Steep canyon cliffs, spiny cactus, sand, an endless line of blue and tan. The desert is a place of silence. But listen, a scurry of feet, a lizard, a mouse, disappears in shadow or an underground house. The desert is a place of secrets. Watch out! A keen-nosed coyote trots from bush to bush. A sharp-eyed hawk dives from a cliff top swoosh. The desert is a place of danger. Look, splashes of red, pink, and white after a brief spring shower. Amidst dry ground and spines, a surprise of flowers. The desert is a place of beauty. So now first question is, what animals are named in the poem? In the poem the animals that have been named are lizard, mouse, coyote and hawk. Hawk is the largest. If you see over here, hawk is the largest animal in these, right? Which animal do you think is the most dangerous for a mouse? As we read before, that these coyotes, they are the most dangerous. Coyote is the most dangerous for a cat. Coyote is the most dangerous for cat, right?
It is a place. What do you think the poet feels about the desert? When the poet says that it is a place of silence, secrets, and danger, but it's a place of beauty, right? So now we have learned this unit of this chapter. Now, in the next, inshallah, lecture, we'll go to the next unit. I hope you are enjoying. अगर आप हमें एंजॉय करते हैं तो हमें लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक करेंगे तो हम फटाफट आपको वीडियोस बाकी भी अपलोड करते जाएंगे। और हमें सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी अपने दोस्त को भी प्रॉब्लम हो रही है इन लेक्चर्स में तो उनको ज़रूर हमारे चैनल का बताइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। इससे सवाब है और ये सदका जारिया है। अल्लाह हाफ़िज़।